Dear students, now I think after the units for units, I think this is our second topic, that is about the dimension. Last class we have find it out that how to find the what do you have the radians and the angle differences. So it's a very simple. It's very important. Dimension. What is the function of a dimension, right? So let me clear you very basically that dimension function is nothing. It's a function have a different thing, right? What is the meaning of the dimension? Dimension indicate that, right, fundamental quantities of a derived. You know क्यों डिराइव? क्योंकि फंडामेंटल का तो हम फाइंड नहीं करेंगे. इज इट राइट? डिराइव में जितनी भी तुम्हारा फंडामेंटल क्वांटिटीज आते हैं उसके पावर्स कितने हैं और हाउ मेनी टाइम्स सपोज m हैज ए पावर 2, so that means mass is repeated twice. So how many times? Twice. So once again write the definitions. Number of times of a fundamental quantities is contained in the derived quantity is known as the dimension. Dimension of that fundamental quantity. Very simple. Fundamental quantities number of times कहाँ contained रहेगा. Is it right? Okay. Next see, the dimension is represented with a third bracket. इस तरह से third bracket लगाएंगे और इस तरह से either m l t a k कैंटिला मैंने सातों लिख दिया है. It may be any 2 3 4 or whatever it is. Clear? This way we represent dimensional formula, right? A formula in which all the or some of the fundamental quantities are there. Is it right? तो डायमेंशन में होता ही यही है कि राइट, डायमेंशन में कभी भी हम लोग डिराइव्ड को नहीं लिखते. अगर डिराइव्ड को लिखते भी है तो दैट विल बिकम द व्हाट इक्वेशन, वो एक इक्वेशन में आ जाएगा. सो व्हाट इज डायमेंशनल इक्वेशन? इन विच अ डायमेंशन इन विच सम फिजिकल व्हाट relations or derived units will be there. But formula में क्या होता है? All the fundamentals will become. Okay, yeah, this is nothing, right? Three function of a dimension. Dimensions के तीन functions होते हैं, right? What are that? Number one, conversion of one unit to another one. It is right. For example, you say suppose CGS to what? MKS, or MKS to what? CGS. Anything, any conversion. Checking the correctness of any equation. Suppose you have one equation, is it right? What? Energy is equal to half of mv square. Whether the equation is correct or not, to prove that we have to use the dimensional analysis. है ना, dimensioning से हम लोग कर सकते हैं. Third one, the relation between the various physical quantity. यानी कि relation निकालना. For example, force का formula निकालना. Force का formula m है, तो ये निकालना है. टू फाइंड आउट द रिलेशंस ऑल्सो हेल्प अस बाय द डायमेंशन. तो ये इंपॉर्टेंट जो तुम्हारे क्वेश्चंस में आ सकते हैं वो यहाँ से. दिस थ्री आर इंपॉर्टेंट. क्लियर? एंड ऑन बेसिस ऑन सॉल्विंग दिस वी नीड अ प्रिंसिपल. एक प्रिंसिपल है जिसको हम लोग बोलते हैं होमोजेनिटी. Is it right? G-E-N-E-I-T-Y. Homogeneity. Principle of homogeneity indicates that कि both the sides of any physical relation, both the sides of any physical relation, like E is equal to half of mb square, one side is half of mb square, another is E. So in any physical relations, both the sides of the dimension with the fundamental, definite dimension fundamental से ही होता है, right? With the fundamentals are always equal होगा. ये हमेशा याद रखना. ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है. प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? होमोजेनिटी. Okay, let's now see how we are coming with this. Is it right? Yes. So this is the another topic, very important. Types of variables and constant, right? So these are under the four categories. So all in our physics, right, we use physical quantities, right? We use some other quantities like, you know, like angles. Angle को तो हम लोग नहीं लेते इसमें. It doesn't have a dimension also. So what is this all? They all are categorized in this like dimensional variable. Very important. देखना, dimensional variable मतलब variable मतलब different है ना, उसका dimension होगा. जैसे area का डायमेंशंस भी मिलेगा और हैव अ डिफरेंट एरिया. तो वेरिएबल्स भी अलग अलग है. डायमेंशन लेस वेरिएबल. डायमेंशन लेस मीन्स नो डायमेंशन बट हैव अ वेरिएबल, लाइक एंगल 2 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, बट एंगल का कोई डायमेंशंस नहीं होता है.
Sin theta, cos theta, tan theta, they doesn't have any what dimension. Is it clear? So वही हमने definition में भी लिखा, the physical quantity which possess dimension and have variable. Here a physical quantity which do not possess no dimensions but have variables, है ना. So keep it in mind, angle, sin theta, ये हो गया variable का. Now about the constant, once again dimensional constant, फिर से वही a physical quantity which have dimension and have a constant value. For example क्या हो सकता है, gravitational constant, मैंने एक ही लिखा है यहाँ पे. There are so many other constant values, is it right? Gravitational constant, Planck's constant, Boltzmann constant, these all are, you can write also, is it right? Is it a gravitational constant, Boltzmann constant, Planck's constant, etc etc, और भी बहुत आते हैं. बट जिसका डायमेंशन नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है. फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट हैव अ डायमेंशन बट हैव अ कांस्टेंट वैल्यू, डायमेंशन भी नहीं लेकिन कांस्टेंट वैल्यू जरूर है ना. कांस्टेंट, कीप इट इन माइंड, ये दोनों कांस्टेंट में पड़ता है और ये दोनों वेरिएबल में पड़ता है. तो क्या क्या हो सकता है, पाई, यस वी नो दैट, नो डायमेंशन बट हैव अ कांस्टेंट वैल्यू. ई एक्सपोनेंशियल 2.718 वैल्यू टू द पावर 1, 2 लेंगे फिर इसको फिर से 2.71 से मल्टीप्लाई करो, तो दे हैव अ कांस्टेंट वैल्यू. इज इट क्लियर? ओके, सो नाउ this is my first function, use of the dimension. So let me take the use, you know the functions, there are 3 different functions we have already discussed. So out of these 3 functions, let me take one, and that is first one was the conversion. Is it right? So to know about this well, we need some examples. So examples, one of the example is here. Let me take example as a question. Convert 1 Newton to dyne. Is it right? By the dimensional analysis. क्वेश्चन लिखा रहेगा डायमेंशनल एनालिसिस. वैसे तो हम सिंपल में भी कर सकते हैं, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना. सो फॉर दैट यू शुड नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. इसका एग्जांपल, दिस एन स्टैंड फॉर द न्यूमेरिकल एंड डी फॉर द डायमेंशन. Everywhere you can see numerical and dimensions in both the sides are always equal. And dimensions why equal? You know that because already it was explained by the principle of homogeneity. To simply explain what the principle of homogeneity explain, that of any physical relation both the sides of the dimension should be always equal. Okay, so if it is equal, first you find what the Newton is related with the force, and if it is related with the force, we need a dimension of the force. So dimension of the force is, we know that force है ना, force equal to mass into acceleration, mass m, and acceleration is L by t square, है ना, which I have written here. So you know that to find the dimension always you need equations which perfect. Clear? Okay, once again let me write here for you. This is a rough part only. Is it clear whether it is visible or not? Yes. So you know that force is equal to mass into acceleration. मास के लिए डायमेंशन हो गया m और एक्सीलरेशन का डायमेंशन हो जाएगा L by t square, है ना. Okay, if this way I have written this. Similarly, now this n1 the numerical and this is for the another numerical. Is it clear? Okay, so look at here, mlt minus 2, mlt minus 2, but this is 1 1 1 for one side, 2 2 2 for another side. Another side mean this is what dyne is in the definitely CGS and this Newton is in what MKS. So I have to convert from the MKS to the CGS. So that's why I've written dimensions are equally clear, and 1 for this, that is MKS. Now M2 divide कर दिया, M1 by M2, L1 by L2, T1 by T2. Times are always in seconds, so whenever seconds is multiplied to the power 1 to the power anything is always 1. But here this L1 from MKS, L means length, तो definitely it will be a meter होगा, तो मैंने इसको 100 सेंटीमीटर लिखा. L2 is from CGS, so definitely CGS in centimeter I have written here 1 centimeter. Similarly for mass it is 1000 because it is kg and 1 gram, so you can see it is 10 to the power 5. So the n2 will be what, 10 to the power 5. So you can see in the second function is to what? Second function is to check whether the relations are okay or not.
So for example, let me take again in one question, check whether the equation is correct or not. This definitely by dimensional analysis. For that, you need the dimension of first s. S is a displacement, so I will write under the length. Dimension of ut once again. Look at here how we write this. पूरा नहीं लेना है, जो मल्टीप्लाई और डिवाइड रहेगा उसी को लेना है ut. So u is the velocity, so lt minus 1 and t time, so cancel and it will give it l. Here also for numerical there is no dimension, so I will take for the acceleration lt minus 2 and t is square, t is square. This is what l. So here we got they all have, and according to the principle of homogeneity already explained, फिर से बता देता हूँ. Principle of homogeneity कहता है कि प्लस दो राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में इन बिटवीन टू इक्वेशन इफ देयर इज अ प्लस, that means also indicate this dimension and this dimension are always equal, even it is equal with the right hand side or left hand side. यानी कि dimension of this and this should be equal. It is there, and is it right? So we can say the equation is correct. Is it clear? In the third equation, that is I mean to say third functions, देखो यहाँ पे once again here we taken one example. Example is that we know that centripetal force is depends on radius, mass and velocity of circular motion. Determine the equation of force. Definitely I will write here dimensional. So जब भी dimensional में पूछेंगे तो हम लोग dimension से solve करना है इसको, ठीक है ना. So look at here how we write. जैसे ये depends बोलेंगे ना, तो दिस इज द मेन फॉर्मूला, फोर्स डिपेंड्स. तो फोर्स में यहाँ लिख दिया, और डिपेंड्स में कौन कौन है. डिपेंड्स में मैंने राइट हैंड साइड में लिखा रेडियस, मास एंड वेलोसिटी. रेडियस, मास एंड वेलोसिटी टू द पावर ABC. अब इसको तुम कैसे भी दे दो, देयर विल बी नो प्रॉब्लम. यू कैन राइट m टू द पावर c, v टू द पावर b एंड दैट्स यू कैन राइट आगे पीछे कहीं पे भी लिखो, लेकिन लिखो एक वेरिएबल्स. ओके, फर्स्ट वी फाइंड द डायमेंशन ऑफ फोर्स. यू नो mlt minus 2. डायमेंशन ऑफ मास m ही होता है, टू द पावर a लगा दो बिकॉज इट इज a. वेलोसिटी b, वेलोसिटी इज lt minus 1 b, सो इट इज lb t minus b. देखो मल्टीप्लाई करने से ये आएगा. रेडियस इज अंडर द लेंथ, c लगा दिया. क्लियर. आफ्टर दैट नाउ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि बोथ द डायमेंशंस आर इक्वल. मीन आई मीन टू से बोथ द साइड्स ऑफ द डायमेंशंस आर ऑलवेज इक्वल. तो मैंने देखो इक्वल कर दिया दोनों साइड्स में, है ना. इज इट राइट? ये करने के बाद नाउ यू राइट इट्स सिस्टमेटिकली l टू द पावर b और l टू द पावर c, तो दोनों को ऐड करना है. पावर्स आर ऑलवेज एडिंग. t माइनस b कर दिया. अब लुक एट हियर a, है ना, दिस a हियर. सिंस डायमेंशन इक्वल बोला ना तुमने, तो इफ डायमेंशन इक्वल देयर पावर इज आल्सो इक्वल. m का पावर a है तो यहाँ पे 1 है, तो आई रिटन हियर 1. b plus c is 1, but I don't know any one of it, so पहले मैं यहाँ चले जाता हूँ. माइनस b is minus 2, so यहाँ लिख दिया minus 2. b plus c, अब b already got it 2, so 1 minus 2 is equal to minus 1. तो minus 1 मतलब c देखो नीचे आ गया ना, c is what r, तो ये देखो r नीचे आ गया. b2 है तो b square आ गया. In this way we can find a formula or equation. Thank you.